Hi friends, welcome back to Be Confident. I'm Smita Agarwal. In today's video, I'm going to be sharing with you a very easy technique with which you can get flawless and long-lasting base. So let's get started and let's see how you can get a perfect base. So the first thing that I'm going to apply is rose water. Here I'm using Khadi rose water. This is one of the best products that I've used so far. बहुत ही प्राइस इसका रीज़नेबल है और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. दिस इज़ फ्रेग्रेंस फ्री एंड प्योर. मैंने इसे एक नियर बाय खादी स्टोर से परचेज़ किया है. वैसे मैं हर प्रोडक्ट की आपको परचेज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसका प्राइस चेक कर सकते हैं. Now I'll be using the L'Oreal Revitalift Crystal Micro Essence. You just have to take 3 to 4 drops of it और इसे इस तरह से प्रेस इन करना है फेस पर so that it gets absorbed into the skin. Actually मैंने ये परचेज़ किया था in summer and I have got oily skin. मुझे इससे ब्रेकआउट हो रहा था. So I just stopped using this और अभी मैंने इसे विंटर में स्टार्ट किया यूजिंग and it is giving good results in winter. देन आई अप्लाइड लिप बाम और फिर फेस क्रीम के लिए आई एम यूजिंग दी VLCC लवांग मॉइस्चराइज़र. दिस इज़ दी 100 ml बॉटल एंड इट इज़ प्राइस्ड फॉर ₹160. ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है. इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट एंड इट इज़ नॉन ग्रीजी ऑन द स्किन. Actually, this moisturizer is apt for summer. It's got cooling effect, but in winter, whenever I use it in combination with L'Oreal Micro Essence so that I don't get breakouts. Then to prime my face, I'll be using the Benefit Professional Face Primer. This is the mini packaging of this product. It is priced for around ₹1200. I'll mention the link in description box. It's a nice product. It immediately gives a mattifying look and it nicely covers pores and fine lines. Now for foundation, I'm using the L'Oreal Paris Infallible Stay Fresh 24-hour foundation. और इसको अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ करूँगी पैक का ब्यूटी ब्लेंडर. ये है अराउंड ₹500 का एंड इट्स अ वेरी नाइस ब्लेंडर. दिस फाउंडेशन दैट आई एम यूजिंग, इट इज़ इन द शेड 140 Golden Beige. It's light on the skin and is buildable. And I'll use this damp beauty blender to blend this foundation. ब्लेंडर नेचुरल फिनिश देता है फाउंडेशन को. एंड वन मोर थिंग, ब्लेंडिंग इज़ द की. आप जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतनी ही अच्छी और स्मूथ फिनिश आपको मिलेगी फाउंडेशन की. फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग द Maybelline एज रिवाइंड कंसीलर. इस तरह से रोटेट करके आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ प्राइस फॉर ₹620 एंड आई एम इन द शेड 130 मीडियम. This shade is slightly lighter for my skin tone, but it's fine because right now I'm using it for highlighting purpose. Now to blend this concealer, I'm using the PAC 219 concealer brush. PAC के सभी brushes बहुत अच्छे हैं. आप इसकी कोई भी range try कर सकते हैं. They are really nice. Again, blending is the key, so keep on blending till you get proper, nice, smooth finish. Now next comes contouring. I am not a very big fan of contouring and I easily skip this step, but since I'm talking about getting a perfect base, so I'm including this step. For contouring, I'm using the Benefit Hoola bronzer. This is the mini packaging of this bronzer. I like this because it gives a very natural looking contour और बिल्कुल भी harsh lines आपके face पर नहीं दिखेंगी.
a very good thing about Benefit products is that they have mini versions of almost all their products. So if you want to try their products, आप easily mini packaging purchase कर सकते हैं, and if you like, then you can go for the bigger packaging. Now to set my base, I'm using this Amway Persona loose powder. It's a nice product, काफ़ी fine particles हैं इसके, and ये अच्छी smooth finish आपके face को देता है. And this is the Vega powder brush that I'm using to apply it. So now I am done with the base, and now here is the technique that I usually use. अब मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, एंड देन आई विल नॉट स्क्वीज़ इट. इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी पानी है, एंड इट्स क्वाइट हैवी. नाउ दिस वेट ब्यूटी ब्लेंडर आई एम गोइंग टू यूज़ ऑल ओवर माई बेस. इस तरह से मैं डैब डैब करते हुए इसे पूरे फेस पर यूज़ करूँगी, जस्ट वंस और ट्वाइस. बिल्कुल भी हार्श प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल लाइट हैंड से आपको इस तरह से पूरे फेस पर, अपनी पूरी बेस पर इसे यूज़ करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ. तो इस तरह से यूज़ करने के बाद आपका फेस स्लाइटली वेट हो जाएगा. डू नॉट यूज़ फिंगर्स ऑन योर फेस, लेट इट ड्राई ऑन इट्स ओन. आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी है. मैंने कम्प्लीटली वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है, एंड नाउ आफ्टर 5 minutes इट्स डन. So guys, this is that small tip that I just wanted to share with you all. After completing your base, applying your foundation, just use a wet beauty blender all over your face the way I did, and it is going to make your foundation look flawless, and it will make it long lasting. This base is not going anywhere before 8 to 10 hours. In fact, after 4-5 hours it will start looking more natural, more like your skin. So do give this technique a try. It's very simple to do. So this is all for today. If you like this video, do like, share and subscribe to my channel. See you soon with another video. Till then, bye bye and